And welcome back to Dr. Saurav's classes, and we are at question 2. So we were solving, we have started solving English literature UGC NET paper, especially from the December one, and this question paper is specially catered for those who are UGC NET aspirants, but it can be helpful and beneficial for CUET PG students as well. So you can get lots of informations and insights from this particular series of questions that we will be solving. But before we start the class, let me tell you one thing. So for any kind of doubt, for any kind of classes, study material, mock tests, please contact or WhatsApp us, call us at 9062395123, and the number is very much in your screen, and you can take it down, call, and we are there to help you out for any kind of doubt and any kind of clearances for any study materials. Chalo. So before wasting any more time, let's move on to the question. Just a minute. Which of the following definition of various social variation in language is incorrect? Convergence is a speech style that attempts to reduce social distance and use forms that are similar to those used by the person we are talking to. A register is conventional way of using language that is appropriate in a specific context, which means which may be identified as situational, occupational or topical. Slang describes words or phrases that are used instead of more everyday terms among young speakers and other groups with special interest. Jargons are words and phrases often involving body parts, bodily functions and sexual acts that people avoid, reasons related to religion, politeness and prohibited behavior. I think this question is wrong. There is no not even optional answers has been given. So the direct question, direct answers has been given over here, options has been given. If it had been a combination answer, it would have been a proper way to answer it, but there is no proper way. I think this question can be challenged, and people have challenged it. All the aspirants that they have those who have appeared for the question. I'll tell you why. Please read the question once again on your own, and we will start solving it right now. Okay, chalo. So which of the following definition of various social variation language is incorrect? So we have to find the incorrect one, and over here first one is saying convergence is a speech style that attempts to reduce social distance and use forms that are similar to those used by the person we are talking to. This is correct. Why this is correct? Let me help you over here. See, in communication, accommodation theory, and it was given by, tell me who has given it? It's Howard Giles, okay? We all know it. Now, convergence is equal to adapting your speech to become more similar to interlocutor, okay? Adapting speech to become more similar to interlocutor, to your interlocutor. Okay, and the purpose is to reduce social distance. The main purpose is to reduce social distance. ठीक है, अब नंबर 2 पे जाती हूँ. A register is a conventional way of using language that is appropriate in a specific context, which may be identified as situational, occupational or topical. This is correct. Again, this one is also correct. See, registers refers to language variation depending on context or situation. Okay, situation, context that has been mentioned, and the examples can be legal register, scientific register, okay, medical register. This can be the examples. Okay, coming to number 3.
Slang describes words or phrases that are used instead of more everyday terms among younger speakers and other groups with special interest. ये गलत है. क्यों गलत है बताओ, क्यों गलत है? बिकॉज स्लैंग डज नॉट रिप्लेस एवरीडे लैंग्वेज. पहली बात तो ये देखो कि वाई आई एम टेलिंग यू स्लैंग डज नॉट रिप्लेसेस ये एवरीडे लैंग्वेज को नहीं रिप्लेस करते. इंस्टेड स्लैंग इज इनफॉर्मल वोकेबुलरी. हाँ, ये कह सकते हो. स्लैंग क्या है? स्लैंग है इनफॉर्मल वोकेबुलरी. Informal vocabulary used by particular social groups. Okay. Particular social groups, youth, subcultures. Okay. It often exists alongside standard language. Alongside the standard language. समझ में आया? And not necessarily instead of everyday terms. So thus the definition is incorrect. So जब हम लोग गालियाँ देते हैं तो हम तो अगर हिंदी में दे रहे हो तो एवरीडे तुम मतलब रिप्लेस थोड़ी करते हो. इसके साथ साथ एक इनफॉर्मल वोकेबुलरी गुस्सा आ गया तो बता दिया, तो स्लैंग वही होता है. एग्जैक्टली गाली का मतलब भी नहीं होता. स्लैंग इट्स वेरी काइंड ऑफ कोलोकियल टर्म को भी स्लैंग कहा जाता है. ठीक है. जार्गन के बारे में देखते हैं. जार्गन्स आर वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ये भी गलत है, हम लोगों ने पढ़ लिया. ऑफन इन्वॉल्विंग बॉडी पार्ट्स, बॉडीली फंक्शन, सेक्सुअल एक्ट्स दैट पीपल अवॉइड फॉर रीजंस रिलेटेड टू रिलीजन, पोलाइटनेस एंड प्रोहिबिटेड बिहेवियर. ये तो बेसरासर गलत है. देखो यहाँ पे दो गलत है. पहली जार्गन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे. एक्चुअली दिस डिस्क्राइब्स टैबू. जो बात यहाँ पे किया गया है ना, ये टर्म जार्गन नहीं हो सकता, ये टैबू होगा. ये टैबू होगा. ठीक है. और बट इन द क्वेश्चन फॉर्मेट द क्लियरली इनकरेक्ट डेफिनेशन, आई डोंट थिंक सो. फ्रेजेस के जो भी बात किया गया है यहाँ पे, फ्रेजेस ऑफ इन बॉडी पार्ट्स, बॉडीली फंक्शन, सेक्सुअल एज अ पीपल अवॉइड द रीजंस रिलेटेड टू रिलीजन, ये सारे के सारे डेफिनेशन टैबू के साथ बहुत सिमिलर होता है, जार्गन के साथ नहीं. तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की है तो इनकरेक्ट दोनों हैं. 3 भी है, 4 भी है. और कॉम्बिनेशन आंसर में हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है. अगर यहाँ पे ऐसा होता है 1 2 3 कॉम्बिनेशन है, या 2 3 4 कॉम्बिनेशन है, या ओनली 3 4 है, या ओनली 1 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 4 को सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि दोनों गलत है, दोनों इनकरेक्ट है. और 1 2 दोनों सही है. तो इनकरेक्ट मांगा है तो दोनों ही अगर इनकरेक्ट है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? आप 3 सिलेक्ट करो, 4 सिलेक्ट करो, कुछ भी सिलेक्ट करो, सही हो जाएगा. ठीक है. मैं पढ़ते ही मैं बता दिया आपको कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है. ठीक है. ये अगर चैलेंज करोगे तो समझ में आ गया ना. अगर यहाँ के क्वेश्चन के अगर प्रॉब्लम था तो शायद लोगों ने चैलेंज किया होगा, इसमें मार्क्स मिल जाएगा सबको, 2 मार्क्स. इस तरह का क्वेश्चन में इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि क्वेश्चन कभी छोड़ के मत आओ. अगर पता भी नहीं है तो एटलीस्ट अंदाजे से कुछ भी कर दो. पता नहीं कब क्या बदल जाए, कोई क्वेश्चन चैलेंज कर दे, क्वेश्चन ही गलत रहे, तो आपको मिल जाएगा फ्री का 2 मार्क्स. क्यों वेस्ट करना है? ठीक है. और ऐसे भी तो हो सकता है कि तुक्के भी तो लग सकते हैं. ठीक है. चलो, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. वी विल बैक विद द नेक्स्ट वन. प्लीज बी विद अस. बाय बाय.